वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम में। क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे एंड फुल बूम मचा रहे होंगे। तो आ चुके हैं वापसी एक और कैरेक्टर की स्टोरी लेकर, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी कमाल की है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देखते हैं कि बाइजू की स्टोरी कितनी कमाल की होती है। आज बाइजू की हमें स्टोरी करनी है और ये ओनर हैं बूबू फार्मेसी के। बी यू। तो हमें जाना है पहले ल्यू में, इस फार्मेसी में। ये वाला है एक्ट, यही वाला है, द हार्ट ऑफ हीलिंग। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो आज पता करेंगे कि कितनी कमाल की स्टोरी है ये इस कैरेक्टर की। स्विच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? इस कैरेक्टर के बारे में हमें ज़्यादा जानने को मिला नहीं। लास्ट टाइम ने आर्कन क्वेस्ट किया था, What's your लियो name, गई buddy? था। Are you here to buy some medicine? Where are your mom and dad? वहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पता चला है बस। Are you lost? हम्म, No, I'm not. Um, my name's Ayu, and I'm here because. Hey there, Chi-Chi. Hi, Gray. What's going on? पीछी भी काम करती है वहीं पर। Hi, Traveler and Paimon. तो ये इतना स्लो क्यों बोलती है? क्या हो गया You've इसको? actually come at the perfect एनर्जी time. लो है। This little boy seems to have gotten himself lost. I think he must be new to the city. Probably wandered away from his parents and. हम्म। No, listen to me. I'm not the one who's lost. It's my dad. Your क्या dad? मतलब? How does a fully grown man manage to get lost in Liyue Harbor? भाई Well, ये नहीं खोया वो खो my गया। dad's always been kind of forgetful. In the past, he was just a little slow to react sometimes. But I'm worried that it's getting more serious. अच्छा, तो So, दिक्कत है, प्रॉब्लम what है उनको about भूलने की your आदत है। mom? She went out a few days ago to gather some herbs for my dad, but she still hasn't come back. Meanwhile, my dad's been getting worse and worse. I remembered that the owner of Boo Boo Pharmacy always runs a clinic in Chingsa Village during the Lantern Ride, so I thought, why don't I take Dad to Liyue Harbor to see him there? बिल्कुल भाई, यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। द ओनर ऑफ बूबू When we फार्मेसी। got to the city gate, I took a moment to ask the Millith guards for directions to the pharmacy. And then, when I turned back around, my dad was gone. I asked the Millith guys to go find him, but he said they won't be able to send that many people. So then I figured maybe I could ask some other people in the city to help. You came to the right place. We're pros at finding people. Isn't that right, Traveler? बिल्कुल भाई, यही तो खासियत है ट्रैवलर और पाइमोन की। लोगों को ढूंढ के निकालते हैं, कहीं भी छुपे हो, किसी भी जगह पर। इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर अस। Junction can help. She has a good sense of smell, like a dog. Hey, who's talking about me behind my back? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया भाई, इसके पास बात करने वाला सांप है, वाइट कलर का, वाइट स्नेक। Sheng, Chi-Chi meant that as a compliment. There's no need to be upset. का नाम भी है चैंग शेंग। Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo Pharmacy. How might we be of service? बूबू फार्मेसी। You have a talking snake? Oh, are you Uncle Baiju? अंकल बाईजू। Uncle Baiju. मेरा भी यही रिएक्शन है। Sheng, now's not the time. My dear boy, could you tell me more about your father's condition? As much as you can recall. Yes, Uncle. Dr. Baiju. डॉक्टर। I see. And your family lives near Chingsa village, you say? I visit patients there frequently, but I don't recall ever seeing you or your parents. इसने अंकल क्यों बोला पर Uh इसको? huh. My mom doesn't like meeting other people, especially during Lantern Ride. She always tells me to just stay at home and keep my dad company. Is that so? Ayu, by any chance, is your mother's name Jiangli? Whoa! Jiangli? Yeah, it is. Do you know my mom, Dr. Baiju?
I certainly do. Gui, Chi-Chi, are there any pressing matters in the pharmacy at the moment? Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would very much like to assist with the search. Would the two of you have time to join me? Don't forget us two. We already told Ayu that we'd help. Oh, really? Well, that's wonderful. We are most grateful for your support. Okay, you can count on us. Chi-Chi and I need to clear up the shop front first, but once that's taken care of, we'll be right out to help you with the search. ओ भाई देखो, इतनी तो यही नहीं है, इतनी बड़ी Family जो is पहन रखा है इसने. very important. Thank you. Then I'll leave you to handle the pharmacy. Traveler, Paimon, why don't you come with me and Ayu? Let's start by talking to the Millilith guards at the city gates, see if they have an update. मिलिलिथ कार्ड से पूछना पड़ेगा हमें कहाँ गए हैं इसके डैडी. ढूंढना पड़ेगा हमें आयु के डैडी को. आयु के डैडी कहाँ मिलेंगे? जरा पूछते हैं गेट पर. देखा तो नहीं है इन लोगों ने. देखा होगा यहाँ से बाहर जाते हुए. They searched to the north, but couldn't find anyone who matched the description. Well, that complicates things. The city folks say there's no sign of him either. We need to start looking further afield. But where are we gonna get the people? Excuse me, sirs. Have you found out anything about my dad yet? Ah, hey there, buddy. Dr. Baju. What brings you out this way? The boy asked for our help, so we're here to join the search. Any new developments to update us on? Oh, thank goodness. We were just discussing how we're running out of manpower. Running out of As for manpower. updates, I'm sorry to say that we've searched the surrounding area thoroughly, but didn't find anything. The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either, so we don't believe he was heading towards the Guili Plains. But it is possible that he was bound for Lu Hua Pool. Lu Hua Pool? The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. We will take that area. You will? Oh, great. We can't thank you enough. बिल्कुल भाई. Sorry we weren't able to find your dad, हम ढूंढ ही buddy. देंगे. चिंता That's मत करो. okay. Thank you for trying. हमें तो लोकेशन पता है. तो लोकेशन आ गई हमारे पास. कितनी दूरी पर है? 400 बस. इजी तो है. डोमेन. हाँ. Dad! अरे Dad, can you hear me? ऊपर होंगे बेटा. रुक जाओ. Look, there's somebody. कोई तो मिल गया. Oh no, it's. Hey, you! Stop! Don't go any further! अरे Watch where you're going! ओके. अरे वाह. इसलिए पहले हुताओ का हुआ था. हुताओ भी है Dear इसके अंदर. customer, Wangsheng Funeral Parlor does appreciate your patronage, but you needn't hasten the inevitable. Are you all right? Huh? बचा लिया भाई हुताओ ने. Dad! Hey, Hu Tao! My, who do we have here? It's the traveler in Paimon. My worst nightmare. I see she still hasn't warmed to you. Thank you, Director Hu, for saving this man. Dad, are you okay? Do you recognize me? It's me, Ayu. You're... Are you? Who am I?
भाई खुद का ही नाम Your भूल गए name तो। is Jia Liang, and you live just west of Chingsa village. You were supposed to come to Liyue Harbor to see the doctor. Remember? Does that jog your memory? इनको नहीं जाना चाहिए भाई Oh, बाहर। my name is Jia Liang. Liyue Harbor. See the doctor? Uh, yes, I'm आ रहा है Jia याद आ Liang, रहा है। and I need to see the doctor. Wait, why do I need to see the doctor? Uh-oh. He seems in really bad shape. We need to get him back to Boo Boo Pharmacy right away. बिल्कुल भाई, Sorry, बुबू Hotel, फार्मेसी gotta पे जाना dash. है। Dinner's on us next time. Hold on a second. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state, are you? Huh? Why not? What's the problem? भाई किसी इंसान को कैसे याद दिलाए जब वो भूल ही जाता है तो, Come on, कि वो भूल Baiju. जाता है तो Don't याद tell दिलाए me you कैसे? haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? Use what? What are you talking about? Paimon's lost. There are traces of god remains in Jialiang's system. Yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. Paimon, sorry, what? God remains? There's no need to worry, Director Hu. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save lives. What reason would I have to neglect a patient in need who is right there in front of me? तो इसमें स्नेक का काम क्या है? Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. Perhaps out of respect for him, you could give me a day's grace so that I have time to treat him? मतलब सांप वैसे वो वाला काम कर सकता है, वो जहर थोड़ा सा दे सकता है अपना, और उससे ट्रीटमेंट हो सकता है। Now तो you're maybe bringing my great इसी यूज में uncle आता होगा into वो this. Baiju, just what are you planning this मेडिसिन time? बनाने के। Merely to cure this man, nothing more. But of course, if you have any doubt as to my intentions, you are more than welcome to accompany me to Boo Boo Pharmacy and monitor my activities. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being unusually generous today. Don't forget that we are here to... Okay, deal. We're not gonna solve anything by keeping Jialiang here. Yo, Jay bhai, welcome to the stream. I'm happy to do it your way, but What's up? only for my great uncle's sake and the travelers, of course. You must be pleased you brought the traveler along. Otherwise, this would have been a much more vexing ordeal. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Boo Pharmacy at once. Okay. बाइजू, बिल्कुल बाइजू की स्टोरी है आज, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोग कह रहे थे, तो उस हिसाब से आज मैंने सोचा कि इसी की स्टोरी करते हैं। Blockages within the cardiovascular system, reduced blood flow and energy circulation? I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormalities. बाइजू, Dr. Baiju, how bad is it? Can you cure him? भाई इसका स्नेक ज़रूर ठीक कर देगा इसको, Baiju's a लेकिन really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baiju? Ayu, do you know when your father first started displaying these symptoms? I'm not sure. He's been like this for as long as I can remember. But it wasn't as bad as this when I was still little. So it's been a long time indeed. it is a grim prognosis. No, I have a treatment plan in mind. We can start tonight. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and lucid again. काफ़ी शॉर्ट है ये, Thank you, Dr. शॉर्ट स्टोरी Baiju. है। Thank you so much. चलो अच्छा हुआ फिर तो, मतलब मैं वैसे भी लेट हो If गया you था। still have any misgivings, Director Hu, please feel free to hang around for as long as you wish. इसके बाद वैसे भी मुझे जाना है, थोड़ा काम है बाहर, बट वो ये जल्दी हो जाए तो बढ़िया है। However, it would be best if you step outside this room. A doctor must be able to focus when treating a patient. Any distractions heighten the risk of complications.
अब सांप बताएगा भाई सारी इंस्ट्रक्शंस। Yes, of course, absolutely. I'll just go and look at the flowers or something. और क्या देखना बाकी But है इस I गेम will में? be back in an instant at the first sign that something's amiss. We'll be heading out See now. you tomorrow, Baiju and Chung Chung. Bye for now, everyone. हम्म Are you याददाश्त। ready, Baiju? एक मिनट। Ready as I'll ever be. I'm used to it by now. Come on, let's get started. ये सच में डॉक्टर ही है ना? गड़बड़ क्यों लग रही है मुझे? कुछ तो गड़बड़ है भाई। मैंने फुरीना के लिए 20 पुल्स that ends well, huh? मैंने फुरीना के लिए 20 पुल्स सेव कर लिए थे। सुबह पता नहीं क्या हुआ, सारा वर्सली पे विश कर दिया। जय भाई क्या हो गया एकदम से? वर्सली की इतनी याद आ रही है You क्या know, अचानक Paimon's से? kind of curious after hearing Baiju mention those people from his past. What do you think they were like? यू मीन बाइजूस Yeah, मास्टर? you must be curious too, right? Let's go see what we can find out while Baiju's busy treating Ayu's dad. बाइजू नेक्स्ट पैच में फुरीना के साथ आएगा। अच्छा तो ये मतलब बढ़िया कैरेक्टर है। मुझे ये पता है कि ये डेंड्रो है, बट क्या बढ़िया है डेंड्रो में ये कैरेक्टर? डेंड्रो ही है ना वैसे? While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled, snake-bedecked docs doing surgery. वन ऑफ द बेस्ट हीलर है गेम का। अरे भाई होना ही चाहिए यार, मतलब डॉक्टर है वो, बूबू फार्मेसी का ओनर है। सबसे बेस्ट फार्मेसी, बूबू फार्मेसी। 47 पिटी हो गई अब। Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? टू क्लोज टू गेट योर ड्रीम गर्ल फुरीना। Actually, don't tell me. Let me guess. From the looks on your faces, you've got some questions for me. Guilty as charged. So, we were just a little curious about Baiju's master. डेंड्रो हीलर What was है, he like? डेंड्रो हीलर है भाई, पता नहीं पर मुझे तो हील नहीं कर पाएगा ये मेरे ब्रोकन हार्ट को। Oh, and also, how काफ़ी come you टूट and चुका हूँ मैं। Baiju could tell so quickly that Jia Liang had God remains in his system? Huh? I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods defeated in war. गुल्लू फार्मेसी, अरे ये साइड बिजनेस है क्या इसका? छोटी सी Well, शॉप। it is a dusty old tale by this point. Long story short, कुछ in नया the ही स्टार्ट कर ancient दिया मुझे world, लग रहा है इसने dead gods were बाइजू acting ने। up. So our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death. वैसे अपने इंडिया में बना होता तो यही यही नाम होता उसका, गुल्लू These फार्मेसी। days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify gods' remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baiju learn to spot them? Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baiju's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director of Wangsheng Funeral Parlor. Wow, fancy that! ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल है So, भाई। if he was from जय भाई की Wangsheng ड्रीम गर्ल है Funeral फुरीना। Parlor, how did he end up as Baiju's master? हम्म According to my grandpa, he and my great-uncle once went traveling together when they were young. They ended up at Chenyu Vale, where they met a pharmacist. That pharmacist must have cast some sort of spell on my great-uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business and go practice medicine instead. ओ भाई कष्ट कर दिया था मेरे My को लग grandpa रहा had है। a huge argument with him, but he couldn't convince him to stay. So my Okay. grandpa inherited the funeral parlor, while my great-uncle stayed in Chenyu Vale to practice medicine. They never spoke to each other again.
इसीलिए वो बोल रही थी कि थोड़ा सा गड़बड़ सा सीन था। बेस्ट बफर है गेम की। Funeral director to doctor is a बिल्कुल भाई। pretty big career change. Kinda hard to imagine. If he had just become a regular doctor, there would have been no issue. After all, the Wangsheng Funeral Parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a very ominous aura about him. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chenyu Vale tradition goes against the natural order of things. In what way? Don't know. My grandpa didn't know the specifics. And you've seen how wary Baiju is around me. He'd never tell me anything. मैं बस न्यूलेट के लिए पुल कर रहा हूँ उसे। तो आपकी ड्रीम गर्ल नहीं है वो? फिर ड्रीम गर्ल कौन है? But even that says to me that he definitely has something to hide. One thing I do know about Baiju is that he's obsessed with the idea of immortality. But whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say. Immortality. Anyway, so I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. Maybe tomorrow I'll finally figure out what he's up to. After all that, it seems like we have more questions than answers. Never बिल्कुल। mind. We'll just have to ask Baiju himself about all of this tomorrow. 8 बजाने हैं अगले दिन। अगले दिन गेंशिन में नॉन। अरे कैसे नहीं है बताओ? इतना प्यारा गेम है भाई, कोई तो होगी। बेस्ट गर्ल, ड्रीम गर्ल है, बताओ। कभी ऐसा नहीं लगा? कल लाइव क्यों नहीं आया? कल मैं रात को आया था लाइव, पर आफ्टरनून में थोड़ा सा काम आ गया था मुझे। उसके बाद मैं आ गया था घर पे, बाहर गया हुआ था। पर फिर भी सीन ये हो गया था, लाइट चली गई थी। फिर लाइट आई, लाइट भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बट मेरा फिर मन सा नहीं हुआ। फिर मैंने कहा मैं थोड़ा रेस्ट ही कर लेता हूँ, ऐसा हुआ था। It's a new day! Let's go back to Boo Boo Pharmacy and check out how Jialiang is doing. ये खड़े हैं सब भाई। Dad! क्या सीन है? याद आ गया सब कुछ? Dad, you remember me! Yes, I remember now. Oh, I'm so sorry. You must have been worried sick. Has your mom shown up yet? She's been gone for a while, hasn't she? भाई क्या किया है? सच में बेस्ट हीलर है ये, मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सच में अच्छा है हीलर है, मतलब क्योंकि उसने इसका दिमाग ही ठीक कर दिया भाई, सब कुछ याद आ गया इसको। Don't worry, Dad. I got the Adventurers Guild to help us look for her. And Dr. Baiju's gonna help too. Right now, all you need to do is concentrate on बढ़िया getting डॉक्टर है better. भाई, इसके पास जाओ, डॉक्टर के पास। कल जल्दी सो गया था, ओके। Great. जल्दी सोना That's चाहिए भाई। मैं भी wonderful. कल I can't thank you enough, Dr. सोच रहा था, Baiju. रात में भी मतलब बहुत लेट हो गई थी स्ट्रीम, मतलब काफ़ी खिंच गई थी। 4-5 घंटे होने वाली थी ऑलमोस्ट। बट वही है कि मेरा टाइम शेड्यूल बहुत My बिगड़ा पड़ा हुआ pleasure, है। really. It's the डेली least I सोचता can हूँ कि do to जल्दी honor my late master's dying wish. थोड़ा If सा मतलब लिमिट anything, रखूँ। I should be apologizing to you for not making the time to visit in all these years. पर Not वो at ज़्यादा all, जल्दी Dr. हो ही जाती Baiju. है। It's मज़ा भी आ only रहा था because ना यार, Jiangli. Uh, hmm. क्योंकि What was her हम लोग reason बात कर again? रहे होते हैं। कल रात को भी बातचीत हुई, काफ़ी मज़ा आ रहा था बात करके। और वही है, फिर ध्यान ही नहीं रहता यार टाइम का, फिर You're पता नहीं still चलता in the early stages of खेलते खेलते भी। recovery, so you'll need to take it easy for a while. Take it slowly and try not to overexert बायजूस yourself. फॉर अ रीज़न। बिल्कुल। I suggest you stay at Boo Boo Pharmacy and rest for at least the next few days. वाह भाई, ये सांप भी सजेशन दे रहा है, आराम करो थोड़ा सा। Director Who,
Do you have any further reservations about Jia Liang's ये condition? सही है भाई. Assistant Snake, It seems White like Snake. the evil presence is gone after all. You really did manage to suppress it, huh? But how did you accomplish this in a single night? That would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jia Liang for as long as you wish. वही मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई. ये कैसे हो सकता है एक रात में इतना ठीक? क्या मिलाया है? Though I क्या पोषण है regret भाई to इसके say that पास? Boo Boo Pharmacy cannot offer to reimburse Wang Sheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime. Oh, come on, Baiju. I'm not that unreasonable. इसको क्या हुआ? बाइजू की स्टोरी में हुताओ. बिल्कुल भाई, पहले हुताओ की स्टोरी हुई थी. उसके बाद ये अनलॉक हुई थी ये वाली, क्योंकि इसमें का अपीयरेंस है कैरेक्टर का. समथिंग रॉन्ग. I've been stuck indoors for too long. Baiju, take me outside for some air, or I'm going to suffocate. Yes, of course. Everyone, please excuse Chiangshang and myself for a moment. भाई वो उसको उसकी चिंता नहीं है, वो कह रही है मतलब जो भी है वो स्नेक. Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? कुछ तो If it गड़बड़ है. weren't for my quick thinking, they'd have all seen the sorry state you're in by now. But in any case, why must you keep this a secret from everybody? You should at least share your secret with one person you trust. Who's there? It's me. Why did you follow us here? आपने हुताओ की कब करी? अभी कल या परसों. परसों की थी मैंने, कल तो मैं आया नहीं था. परसों के दिन शायद की थी मैंने. Oh, हाँ. it's nothing. I just needed to get some air. What did I just say about putting on a brave face? ये बता नहीं रहा है. इसको कुछ गड़बड़ है भाई, इसको दिक्कत है. आप तो लेनी का करे थे प्रोबेबली. नहीं, लेनी का नहीं किया था मैंने, हुताओ का किया था इसको खोलने के लिए, इस वाली स्टोरी को, क्योंकि ये थोड़ी इंटरेस्टिंग थी. तो मैंने मतलब वो ये किया था ना, मतलब अक्कड़ बक्कड़ किया था, तो ये इसकी स्टोरी आई. Traveler, Paimon, the truth is, Baiju did not cure Jialiang's पर illness. इसको खोलने के लिए पहले हुताओ को करना था मुझे. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the poison in his system. लाइफ फोर्स. Baiju, can you please explain all of this? My predecessors in medicine forged a contract with Changsheng. Every successor to this contract is able to use Changsheng's secret art to treat patients. अच्छा, I believe इसका the है कुछ. irregularities with Jialiang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. ओके, मैं वही कह रहा था, मतलब स्नेक तो The वैसे होते हैं poison ना. has not been purged from Jialiang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Changsheng as the delivery medium. This will suppress the poison's effects for a limited time. पर वही है ना कि स्नेक तो वैसे रियल में भी वो है ना, मेडिसिन में काम आते हैं काफ़ी, इनका जहर काम आता है. वही है. अक्कड़ बक्कड़ सुपर फार्मेसी. बाइजू की स्टोरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है. वही ना, इंटरेस्टिंग तो लग रही है मुझे. Changsheng? You can do that? Huh. Paimon always thought you were just Baiju's strange choice of a necklace. Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti. रिस्पेक्ट, ये इसकी भाषा में बोल रही है If anything, स्नेक की. he मैं भी ऐसे is ही बोलूँ. my mannequin. I was treating I was- patients with Baiju's master's master long before he ever set eyes on his first medical text. Oh, guess you shouldn't judge a snake by its skin.
Please, that's enough. मेरी आदत ना पड़ जाए भाई इसकी स्नेक की. You're looking even worse now Wait a than sec. before. Huto was saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Hardly. Jiangsheng helps to keep my chi in balance, so there is no great harm done. Still, Baiju's life force Still. is not unlimited. We must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body. And suit Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him, or he'll exhaust himself trying to accomplish everything on his own. ओके चलो अच्छा है मतलब ये स्नेक ध्यान रख रहा है इसका. गो ऑन बाइजू लेट अस हेल्प. Baiju, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. This from Time everyone. will see that all secrets surface eventually. Entire lives. Thank you, Traveler and Paimon. Okay. Paimon doesn't think we've seen this side of you, but there's no need to thank us. You've helped us out before. So what are the next The steps? poison in Jialiang's system must have accumulated over a prolonged period. I think I should pay a visit to their family home and look for clues as to how he might have been exposed to it. Exposed to it. Do you know where his house Yes. is? I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot to the west of Qingsa village. Let's head there together once I've asked Gui and Chi-Chi to look after the pharmacy. As well as investigating Jia Liang's exposure to the poison, we should also keep an eye out for Ayu's missing mother, my fellow disciple Jiang Li. कि माँ को भी ढूंढना है. बहुत लोड लेकर रखा है. पर हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है ये. हम ढूंढने का काम करते हैं. अभी ढूंढ कर देते हैं. You want to use my hat as an umbrella? The audacity to even make that. Wind rises. Quit following me. कितना दूर Too है? slow. ये किसका घर है भाई? आज हॉलीडे है, रात को लाइव आओगे फिर? बिल्कुल भाई. It's so well hidden, Paimon's never noticed it before. Nor have I. And I've hosted clinics at Qingsa village many times in the past. If you ask me, Jiang Li was trying to remain unnoticed. Oh, that reminds Paimon. We meant to ask earlier, but it slipped our minds in the rush to get here. Could you tell us more about Jiang Li? You said she was your fellow disciple, right? She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Wei. She is several years older than I and also began her travels far earlier than me. As a result, the time I spent studying alongside her was rather short. Supposedly, Suppose. she met an herb gatherer sometime during her travels and decided to settle down with him. That must have been Jialiang. जहाँ पे एस आता है ना, एस तो वहाँ पे हिस करती है या Wait, करता है ये स्नेक. Chang, are you saying neither of you had actually met Jialiang or Ayu before all of this? Jiang Li did occasionally come back to Chenyu Vale to see our master, but for whatever reason, she hardly ever talked about her family. The last time she visited us, she and Master had some sort of quarrel. We never heard from her after that. It almost seemed as if she'd gone into hiding. Quarrel? What? I don't know. I did not witness the argument myself. ये लोग उसके घर के बाहर आके खड़े होके इतनी सारी बातें कर रहे हैं. Nor did Master ever explain it to me. All he would say is that should I ever encounter Jiang Li or her family in the future, I should do everything in my power to help them. यहाँ तक मुझे याद है आप अभी बायजू को यूज़ करोगे एक
वैली में। ओके, इसकी स्टोरी करे मुझे 5 मंथ हो गए। अरे वाह, Oh, so that's why you went to such extreme तो lengths to बहुत help Delia. पुराना है, मतलब स्टोरी तो बहुत पुरानी है, स्टार्टिंग में ही है, मतलब No. मैं बहुत बाद में कर रहा हूँ। Even if my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him. My decision would have remained the same. Paimon never knew you were so selfless, Baiju. Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. Sorry. So a few words from me is enough to dispel all your suspicions? You ought not be quite so quick to relax your guard, Paimon. Sometimes even the good guys have their own private agenda. What the? Okay, that was the most suspicious sounding thing you've ever said. Let's leave the idle chatter there for now. Jiang Li has lived in this house for many years. There must be something here that can shed a little light on this whole situation. Let's split up, but if anyone finds anything, we'll examine it together. ये स्टोरी आए 5 मंथ्स हुआ है। अच्छा, चलो बढ़िया है, मतलब मैं इतना भी लेट नहीं हूँ। लुकिंग फॉर क्लूज। क्या है? वुडन पिलर। Several faint marks can be seen on the pillar. Maybe it was used to record Ayu's height as he grew up. बिल्कुल। There is some faded writing near the bottom mark. The more quickly Ayu grows up, the sooner can leave. Judging by the number of marks on the pillar, the family has led a secluded existence here for many years. एक क्लू तो मिल गया है हमें। दूसरा क्लू यहाँ पर है। मेरा बस न्यूलेट और वर्सली का स्टोरी क्वेस्ट रह रहा है। अरे वो भी कर लेना, बढ़िया है, वो तो मैंने पहले कर लिया। सम लॉग्स एट द बॉटम ऑफ द पाइल, जो मुझे बाद में करने थे वो मैंने पहले कर लिए, जो पहले करना है वो अब मैं बाद में कर रहा हूँ। लॉग्स एट द बॉटम ऑफ द पाइल हैव बिगन टू root. It must have been a while since any new wood was added to the pile. नेक्स्ट वीक करूँगा, नेक्स्ट वीक कर लेना, क्या दिक्कत है। और कहाँ पर है? आए, Too slow. यहाँ कहीं है ये रहा। ओह, डायरी। डायरी और चाइल्डिश हैंड राइटिंग, सम रूफ टाइल्स, उसी ने लिखी होगी। Broke. Mom and I tried to get up and take a look, but we didn't manage. Luckily, Dad was able to fix them in no time. Okay, the dinner table was a bit wobbly today when we sat down to eat. Dad tried to fix it but ended up breaking one of the legs by accident. Okay, Dad's forgetting things again. I will uh, have to write it all down for now and read it back to him when he's feeling a bit better. Traveler, Paimon, come quick! Hmm. अगला वर्सली का करना। What is this? वर्सली का हो गया है, वर्सली का तो हो गया है। What is Chung this? Chung and I found a hidden compartment. This is what was hidden inside. Good God remains. You sense it too? You're right. This is a poison concocted using god remains. Is it? Breathing? Paimon's not seeing things, is she? No, your eyes do not deceive you. I do believe the poison in this bottle is alive.
पॉइजन अलाइव है? Some toxins act a lot like living organisms. I read about this once in the Origins and Symptoms of Diseases. This ancient class of poisons consists of mother and minor loads, capable of sustaining a connection over vast distances. If it's a concoction of this kind we're dealing with, then both the poison in Jialiang's system and this one here are likely minor loads. Offshoots, essentially. Offshoots? So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison can manipulate the source to indirectly control the poisoned individual's behavior and even cognition. Similarly, the poisoned individual will hear to a varying extent the call of the source. आपने कितने पुल्स सेव कर लिए? मैंने अभी सेव कुछ नहीं किया है, मतलब अभी तो सारे मैंने 60 पुल्स कर दिए थे ना उस पर, वर्सली पर। तो उससे मुझे वो मिली है, दिया करके एक कैरेक्टर है, वो मिली है 5 स्टार। तो उस पर मैं लूज़ हुआ था, और उसके बाद अब मेरा मन नहीं है किसी और कैरेक्टर को निकालने का भी, और सीधा वो निकालेंगे, शोगन निकालेंगे, क्योंकि वो अब वो हो गई ना, The call of the... मिलेगी अब तो, मिलना ही Wait. है। So, back when Jia Liang ran off, maybe that explains where he कंफर्म was हो गया है। heading. He was going back towards King's village. Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient, the mother lode. आपने 50-50 लूज़ किया, मैंने 50-60 लूज़ कर दिया। 60 पुल्स पे Ugh, मुझे वो मिल गई, this is getting दिया। crazier and crazier. What kind of person would do all this just to poison Jia Liang? अभी मेरे पास कितने, 3-4 पुल होंगे, 4 पुल हैं मेरे पास, Hey, why is और धीरे धीरे everyone so कलेक्ट कर quiet लेंगे। all of a sudden? Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment, the one who concocted it is likely a resident of the house. TW रेडिन शोगन गारंटीड हो गया है, बिल्कुल भाई गारंटीड हो गया है। पर मेरा तो 50-50 होगा फुरीना पे। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फुरीना बढ़िया तो है, आप निकाल रहे हो। You mean Jia Liang? Why would he poison himself? और मतलब लक वाली बात है यार, मिल जाएगा, वैसे तो मिल जाना चाहिए। Think a शोगन little भी harder, Paimon. हो जाएंगे आपके Someone पास, else who lives शोगन के here लिए भी। and who might have expertise in crafting drugs. Huh? So you're saying सोचो अभी it was Jiang Li? अभी हम मतलब अभी कितने लोग हैं जिनको निकालना है, पावलट भाई को निकालना है, वो पुल सेव कर रहे हैं, और उनका भी निकल ही जाएगा इजीली, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पुल होंगे। और 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 कोई हारा था पुल में, लूसीफर सेव कर रहा है, मतलब हम 3-4 लोग हैं जो कि एक साथ ही निकालेंगे। और भी लोगों ने बताया कि हम भी निकालेंगे, वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे बताया था कि पुल करेंगे वो लोग भी। तो सभी के एक साथ निकलेंगे भाई, शोगन निकलेगी एक साथ, मज़ा आएगा। Wait, but that doesn't make any sense either. Why would she poison her own husband? आई ऑलरेडी हैव शोगन, उसका वेपन पुल करूँगा मैं। अरे तो फिर क्या दिक्कत है, शोगन है तो फिर I दिक्कत क्या है agree. बताओ। It makes फिर तो little निकाल लेना, sense. फुरीना निकाल लेना। Jiang Li does not strike me as the kind of person who would do such a thing. उसके अलावा कोई चाहिए क्या? Look at the facts, शोगन के though. अलावा कोई कैरेक्टर How चाहिए many उस people बैनर in पे? the entirety of Liyue have the ability to concoct a poison from god remains? क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि उसके साथ एक और कौन It's कैरेक्टर होगा। too early to draw any conclusions. We should question Jia Liang about it once he has made more progress in his recovery. क्या मतलब आपकी पूरी स्क्वाड रेडिन पे पुल करेगी? मेरी पूरी स्क्वाड तो मतलब स्क्वाड तो क्या ही है, सभी लोग पुल करेंगे, ऐसा बोल रहे थे सब लोग। सभी अपने ही है यार स्क्वाड पे। Yes. According to the origins and symptoms of diseases, the minor loads will disappear if the mother load is purged. So if we can find and destroy the ज़्यादातर लोग कर source रहे of हैं। these god remains, the poison will leave Jia Liang's system without the need for any further treatment. मतलब कितने, 2 लोग तो मेरे जो जान पहचान में वो तो कर ही रहे हैं, मतलब सेव। बाकी लोग कह रहे हैं कि हम भी निकालेंगे।
तो ऐसे मान लो 4-5 लोग, 4 लोग तो हैं एटलीस्ट Do जो you know निकालेंगे। anything about God remains in Chingsa मुझे village? मिला के 5। आई हैव ओनली हेard द रूमर। देव भाई Even भी the बोल रहे थे history निकालेंगे। books have no record of this. The only और ones who'll know anything are those गोकू भाई का old नहीं पता मुझे, fogies who have been hanging around here since the beginning of मे बी वो time. फुरीना पे पुल करेंगे। Didn't you used to be on good terms with the Adepti, though? You sure they didn't tell you anything about this? मैं 100% श्योर है कि फुरीना के बैनर पे 5 स्टार मिलेगा, मिलेगा पर गारंटीड नहीं है, गारंटीड नहीं है फुरीना का। फिर तो दिक्कत है, Well, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अभी आपको पुल वेस्ट नहीं करने थे, फिर तो आपको पुल वेस्ट नहीं करने थे अगर उसको निकालना ही है आपको तो। Changsheng's memories and थोड़ा powers are करो, not सेव what हो they जाएगा were मेरे in her हिसाब से तो। prime. और मुझे ये नहीं पता ना आपने कितना एक्सप्लोर किया है वर्ल्ड वगैरह, कितना वो रखा है These आपका। days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life. I fear that such ancient events are long gone from her memory by now. वैसे अभी मत करना कुछ भी पुल वगैरह, कोशिश करना बचाने का। अब कुछ मत करना, सेव करो बस जैसे whoa. तैसे। What? Enter a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky sorcery if you ask Paimon. Hey, plenty of people would jump at the chance to join forces with a powerful being like me. With my assistance in rebalancing your chi, not only can you extend your lifespan, but you will also be stronger, healthier, and able to eat whatever you like with no risk of upsetting your stomach. हम्म बिल्कुल भाई, Stronger बहुत। and healthier? Wow, that's amazing! Baiju, maybe when you retire, you can let Paimon sign the contract with Chung Sheng for a few days. अरे वाह, क्या बात है। सुनते ही जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे टाइमोन रुकती नहीं है। फुल स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिटी बिल्ड हो जाती है। यस, अब पुल नहीं करूँगा। बैनर पे जो भी कैरेक्टर है ऑलरेडी C6 है। अच्छा, बैनर पे जो भी कैरेक्टर है, बट किस बैनर पे जो भी कैरेक्टर है, ये जो अभी चल रहा है उस पर या फिर नेक्स्ट वाले Unfortunately, पर Changsheng's contract जो has आने वाला है? strict requirements regarding the host's temperament. None of her hosts have ever been exempted from these rules. I fear that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. Temperament? Hey! What are you trying to say? Did you just subtly insult Paimon to her face? Strange, Baizu has a weak constitution and didn't his master pass away at an early age? Ugh! Paimon's mad! You're getting ugly nicknames, both of you! Baiju, you're Mannequin Man! Chung Chung, you're just a pain in the neck! अभी जो चल रहा है उसके 4 स्टार कैरेक्टर C6 हैं। हाँ तो वही ना, अभी फिर बचाओ, उस पे मत करो पुल्स। नेक्स्ट वाले पे जो भी कैरेक्टर आएंगे 4 स्टार कैरेक्टर होंगे, वो एटलीस्ट नए तो मिलेंगे ना आपको। This is exactly why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. All right, everybody, calm down. Back to the matter at hand. Is there any way at all for us to seek counsel from the Adepti about this? With how antisocial they are, if it were up to them, they'd go their whole lives without showing their faces to the common folk. बाकी तो एक छोटा सा अभी सरप्राइज है लोगों के लिए। What? वही है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा 1-2 दिन का, या हो सकता है आज ही Seems you're as well connected as रात they में say, कुछ traveler. स्पेशल हो जाए। We are truly fortunate to have you on our side. Oh, if you're talking about who Paimon thinks you're talking about, ज़्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं है, you better do छोटा the सा है, honors. थोड़ा छोटा सा। मैं रेडिन की वेपन पर ट्राई करूँगा, अगर अर्ली मिल गया तो रेडिन के कॉन्स्टलेशन निकालने की ट्राई करूँगा। बिल्कुल भाई।
आप रेडिन सिग्नेचर वेपन पे पुल करोगे? बिल्कुल, मैं मतलब यही सोच रहा हूँ कि वेपन्स भी निकालना है, सभी को निकालना है। वैसे तो मेरे जानकार में जो लोग हैं वही है, तो वैसे ही है। सरप्राइज 10 वेलकिन गिव अवे नहीं भाई, गिव अवे तो अभी कहाँ से ही कर दूंगा यार, गिव अवे कुछ नहीं है, गिव अवेज नहीं है। छोटा मोटा एक छोटा सा You वो called? है सरप्राइज, बहुत ही छोटा मोटा है, तक कुछ खास नहीं है, बट फिर भी। ओह, शाओ आ गया भाई, शाओ की एंट्री Gets Paimon every time. Are all Adepti in the habit of materializing out of thin air like this? Well, this is unexpected. Huh? It's you. Baiju of Boo Boo Pharmacy. I do believe I've had the pleasure before. The lantern rite when we met briefly. I was unaware of your true identity. I must apologize for the discourtesy. Huh? You two already know each other? Our paths have crossed once before. ये बार बार डराता सा क्यों है भाई ये? I sense the presence of evil spirits. Is this why you called me? Let me explain everything that happened. So someone has been concocting demonic poison. बिल्कुल भाई, बूबू फार्मेसी Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. It is lamentable. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Chinksa village. A vile monster known as the Chu once wrought havoc over this land. Before it was subdued by Rex Lapis, the land was finally cleansed of poison when Rex Lapis used statues in his likeness to seal the serpent's remains. Chinksa village was founded some time after that. क्या मैंने आज आया का 90 लेवल पे कर दिया? The अरे भाई, seal is still mostly intact. If the Chu is the बहुत source, तगड़ी ग्राइंड चल then रही it है भाई। must be some of its blood leaking from deep underground. मेरे तो अभी 80 लेवल पर है और वो भी ढंग से बिल्ड नहीं है यार। मेरे को वही है, करना है अभी अच्छे से ना बिल्ड, However, सारे its aura कैरेक्टर्स is सब faint ऐसे ही पड़े हुए and हैं। barely detectable. You will need to investigate further to identify the location of the leak. और वही है, मुझे मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं निकालते ही जा रहा था कैरेक्टर और वो निकलते जा रहे थे, बट बिल्ड नहीं है वो अभी, तो वही है। प्रॉब्ली आपकी स्ट्रीम ज़्यादा डिले नहीं है आज? पता नहीं भाई, वो तो I do कैट not मेरे like पास to जल्दी आ रही है, मुझे intervene ऐसा लग against रहा है। mortals unless absolutely necessary. But when demonic forces are involved, things can spiral out of control. If that happens, be sure to call my name again. आई विल। नाम बुखार और मैं आ गया। ये क्या कर रहे हैं भाई दोनों? Nothing. I do not wish to sway decisions that are mortals to make, ने but उसको देखा, ने उसको देखा, और ये immortality इशारों में may क्या not बात be the हुई? blessing that you imagine it to be. I shall treasure your words of instruction, Master Adeptus. Farewell. ओके। वेट अ सेकेंड, आपने वेपन बैनर पे लूज़ किया ना, तो आपका वेपन बैनर पे भी गारंटीड है। लूज़ किया था वेपन पे? वेपन, हाँ शायद मुझे मिला तो था कुछ, मुझे याद नहीं है, पर What a strange लूज़ किया adeptus. था कि नहीं किया था, पता नहीं, कोई Rather तो different from मिला the था way मुझे। I remember them. That's so for ya. अच्छी बात है वैसे तो, अच्छी बात होनी चाहिए। Info to go off अगर वो परमानेंट है मेरा, तो वेपन भी निकाल दूंगा मैं टोगन का, और वो भी निकाल दूंगा, तो फिर मतलब If the god रेडन भी remains पक्की are है leaking और from वेपन भी। underground, Jiangli must be paying a visit to a देखना पड़ेगा subterranean यार, पता cave नहीं on her है herb या नहीं gathering गारंटीड, trips. आइडिया नहीं है। If we can find the cave. आई सजेस्ट कि आप रेडन और उसकी वेपन दोनों पुल करना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेंगे जय भाई, टेंशन मत लो, दोनों पुल करेंगे। Master, there's a problem. Gwei? Did you run all the way from Boo Boo Pharmacy? आपको वोल्फ ग्रेव स्टोन मिला था?
क्या बात है, आपको याद है? What happened? मेरे को Don't याद ही नहीं था panic. यार। Just catch your breath and tell me everything. बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया था, ये तो फिर अच्छी बात है, फिर तो दोनों पक्के हैं मेरे। It's Jiaoliang. He was fine one minute and बस then अब उतने he हो suddenly जाए, took a turn for the मैं worse. भी जब तक तो हो ही जाएंगे, मतलब स्किप करूँगा तो। Already? How? Based on past experience, he should have been fine for the next 3 days at least. कंटेंट मिल गया आपको? भाई कंटेंट तो क्या ही है यार, कंटेंट तो लोग रहते हैं तो मज़ा ही आता है, खेल के तो कंटेंट वैसे भी मिल जाता है। It seems that my साथ में worst खेल के हम fears लोग have साथ been में खेलते हैं, वही confirmed. हमारे लिए कंटेंट है भाई। Everyone, मज़ेदार, मज़ा back आता to है। Boo Boo Pharmacy now. ये तो फिर वैसे ही है, मज़े मज़े में कुछ भी हो जाता है। मज़े मज़े में इतने कैरेक्टर निकल गए, पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें अब इनका। दिक्कत वो है, बिल्ड ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। आपकी वेपन पिटी देखो। हाँ ये सही कह रहे हो, ये देखना चाहिए मुझे कैसे, तो देखते हैं ज़रा। वेपन पे जाके चेक करते हैं। ओके, ये रहा ना। मुझे कैरेक्टर भी मिला था इस पर, सुक्रोज मिली थी। कितने पुल किए थे? 20। हम्म। और इसके बाद भी मैंने पुल किया है, मतलब ये देखो ना। अरे पीछे हो जा भाई। हाँ हो नहीं रहा था, हो रहा है। 3 पुल और किए थे मैंने। हम दोनों फिर रेडिन की सिग्नेचर वेपन फ्लेक्स करेंगे। बिल्कुल भाई, सब लोग करेंगे यार, सब लोग निकालेंगे। आई होप कि सबका निकल जाए यार, मज़ा आएगा। फिर एकदम ऐसे टीम में ना, चार ऐसे चार शोगन खड़ी रहेंगी, कितना मज़ा आएगा है। अलग ही मज़ा आएगा भाई वो तो, नेक्स्ट लेवल। किसी को मत बताना कि वेपन भी गारंटीड है। गारंटीड है, हाँ। अरे भाई बिल्कुल किसी को नहीं बताएंगे जय भाई। मेरे को ही नहीं पता था, मैं खुद ही भूल गया था, अभी आपने याद दिलाया। खुद ही भूल गया था भाई, मैं क्या बताऊंगा। चलो अच्छा है, नहीं बताएंगे किसी को। श्श्श, किसी को नहीं बताना। चुपचाप रहेंगे भाई, मैं तो अपना मुंह बंद रखूंगा। मज़ा आएगा पर, इस बार मज़ा आएगा पुल करने में। रिटर्न टू बू फार्मेसी। मेरा गारंटीड नहीं है। अरे जब तक आप ज़्यादा कर लेना ना पुल, क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से हो जाएंगे कलेक्ट, हो जाना चाहिए। इतने कलेक्ट हो जाना चाहिए कि अगर आपको नहीं मिला एक बार में तो दूसरी बार तो कंफर्म ही हो जाएगा। वो तो जाने Dad! चाहिए ना। What's इतने पुल। wrong? Dad? पेट में खराबी आ गई है। Don't be scared. Dr. Baishu will be back soon. ये कितने आराम से बात करती है भाई, वैसे ही रिलैक्स हो जाए बंदा। How is he doing? Dr. Baiju, you're back! My dad was doing fine earlier, but then he suddenly started coughing up blood. Now अरे he भाई, can't even get a full word out anymore. ब्लड आने लगा मुंह से तो, खास खास के। Cause I got न्यूवलेट सिग्नेचर वेपन। When अरे Gray left, न्यूवलेट तो, he was still न्यूवलेट का सिग्नेचर वेपन है conscious, आपके पास? और न्यूवलेट but है? now... न्यूवलेट है तो बढ़िया Gui, है अगर please है take तो। Jialiang to the back room and prepare for treatment. Yes, of course. Don't worry, Ayu. I will cure your father. मेरे पास तो वो भी नहीं है ना, मैं मतलब बढ़िया ही रहा फिर तो, मैं उसी पर शायद कर रहा था पुल। He's not gonna use Chang Sheng's secret art again, is he? Is there really no other way to save Jialiang?
पुल्स तो हो जाएंगे बट 50-50 लूज़ होने का भी चांस है। अरे साथ में करेंगे भाई, फिर तो टेंशन मत लो। सबका लक एक साथ रहेगा हमारे साथ। वो देखते हैं जो भी रहेगा भाई। बाकी ये क्या कर रहा हूँ मैं, कोशिश यही रहेगी। बहुत लोग निकालेंगे यार, देव भाई भी कह रहे थे कि मैं साथ में निकालूंगा आपकी। C1 न्यूबलेट है, अरे वाह। और आपके पास वो भी है, वेपन भी है There's. उसका, तो फिर तो कमाल का ही होगा न्यूबलेट। How are you feeling, Dad? और Are बढ़िया। you still hurting anywhere? You're not gonna suddenly collapse again, are you? बिल्कुल भाई, इनको Much कोई better, दिक्कत हो रही IU. है, I'm अपने आप feeling ही गिर much गए वो। better. हाँ, In fact, I can't explain it, but somehow I feel even better than usual. क्या मतलब? Wait, where's Dr. Baiju? I still haven't had a chance to thank him. Seems he moved me here before I came to. Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be resting. जब रेडियन आएगी आप फर्स्ट डे पे ही पुल करोगे? फर्स्ट डे पे कह नहीं सकते, पर देखते हैं। मतलब क्योंकि उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा उसका कोई आइडिया नहीं है ना यार। कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है मुझे, तो इसलिए हो Oh, सकता है। really? Well, he must be अब आइडिया tired नहीं है from ना कि treating कब me for क्या two हो nights in a क्या नहीं हो, row. तो ऐसे कह नहीं सकता, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, I बट don't know how I can अगर begin to हो repay पाएगा तो him for निकाल लेंगे saving my यार। life. I'll have to discuss it properly with Jiang Li once we find her. कोशिश वही रहेगी हमारी। Speaking of which, has there been any word of her whereabouts yet? No, the Adventurers Guild hasn't gotten back to me yet. I'll go check with them again in a bit. I'll come with. फर्स्ट डे पे करना, ओके। Don't forget what Master said. कोशिश वही You're रहेगी जय still भाई। not out of the woods yet, Jialiang. I strongly suggest that you stay and rest at Boo Boo Pharmacy for now. I can accompany IU to the Adventurers Guild. I suppose you're right. I'll have to rely on you this time. Though, on the bright side, this means I can thank Dr. Baiju in person once he's finished resting. Traveler, Baiju hasn't shown his face ever since he went in to treat Jialiang again. Do you think he... लेट्स गो चेक अप ऑन हिम। Huh? Hey, wait up! क्या हुआ होगा भाई, बाइजू को क्या हुआ होगा? Huh? हम्म, You're finally awake? That was far too risky. Even with me here to help you balance your chi. तो बैठे बैठे सो जाता है क्या ये? There was no time. I had no other choice. In any case, it was not completely without benefit to myself. I managed to learn something. Jiang Li's design is quite brilliant. She makes numerous innovations that I can learn from. Alas, if only there wasn't a catch. डिस्कॉर्ड की लिंक दो। ठीक है, 1 मिनट अभी देता हूँ। 1 मिनट देना मुझे। बस 1 मिनट, स्टार्ट हो रहा है डिस्कॉर्ड। कॉपी। ये मैं भूल जाता हूँ यार लिंक का ना। हम्म। ये लो, पिन कर दी है। So, स्टोरी how much कंटिन्यू करते longer हैं do अब। you think Baju's gonna nap for? They've been outside waiting for you the whole time while you were asleep. Shall we at least go and show our faces? हम्म। あ、 Uh,
इसको क्या होता है ये, मतलब एक बार ठीक करने के बाद अपने आप ओवर पावर्ड सा कुछ हो जाता है क्या इसको? Surely he hasn't. There's no way he could have. Who's talking behind our backs again? Ah! Baisu! Changsheng! आर यू बोथ ओके? Of course. There's no need to be concerned. I merely had to transfer a rather large amount of life force on this occasion. But, with Changsheng's help, I will recover in time. स्टिल कांट ज्वाइन। भाई मैं क्या बताऊँ, ये वही सेम ही लिंक है यार, उसी की दी है मैंने, उसी सर्वर की दी है मैंने आपको। Jialiang seemed fine yesterday. Why did he need more life-saving treatment again so soon? ब्रो इट्स लिटरली ऑलमोस्ट 3 वीक्स, अब तो अनबैन कर दो भाई। अनबैन करना मेरे हाथ में नहीं है ब्रदर। बैन अनबैन मैं बैन भी नहीं कर पाता हूँ, मेरे को पता नहीं कैसे करते हैं ब्रो। दिक्कत वही I है। इसलिए तो मैं made आपसे an कह रहा था कि error आप in नई my आईडी बना initial के उस पर diagnosis. ज्वाइन कर लो, तुरंत हो जाएगा काम। Jialiang is in fact suffering from more than one ailment. And as a result, his life force depleted at a greater rate than I had anticipated. मेरे को आइडिया होता मैं अभी कर देता, What? You mean, even if you got all the poison out of him, अगर मेरे he'd हाथ में still होता be तो। sick? Yes. But more pertinently, the poison in Jialiang's system is there precisely because it is being used to manage his underlying medical condition. Jialiang has a rare congenital heart condition, and ongoing treatment is essential to maintaining healthy functioning of his heart meridian. Left untreated, it puts the patient at risk of coughing up blood and fainting, and in the longer term, causes irreversible damage to the internal organs. आप डोम एडमिन हो ना? भाई पता नहीं यार, एडमिन तो हूँ मैं शायद, एडमिन तो हूँ मैं। अगर मैं आपको बताऊँ कैसे करना है, आप कर दोगे? देखते हैं भाई, बताओ कैसे करना है। जहाँ तक मुझे याद है आप एडमिन हो। हाँ भाई एडमिन तो होना ही चाहिए यार, मतलब सर्वर में हूँ मैं। बाकी हाफडेड भाई ने बनाया था, वो जो भी है वो मैनेज करते हैं उस हिसाब से। एडमिन तो होना चाहिए वैसे। अगर टाइम आउट होता तो सेंस भी होता। Though it हाँ was टाइम आउट पता created नहीं, from टाइम God आउट में remains, आ जाते हैं वापस। this formula is not a poison in Jialiang's case. और Rather, बैन में it's his नहीं आ पाते medication. शायद, पता नहीं। Had he not taken it all these years, बाकी he likely कल would have ड्रैगनल भाई died a भी long ज्वाइन हो time गए थे, ago. वो तो कर पा रहे थे ज्वाइन। बाकी लोगों ने कर लिया भाई, और Still, लोगों ने किया था वहाँ पे ज्वाइन। using poison to treat a disease is hardly a viable long-term solution. As time passed, and the poison accumulated in his system, it began to impact his cognition. Moreover, the longer he बाकी relied कुछ चीज़ों upon की this परमिशन तो medicine, मेरे पास the भी नहीं more रहती ना यार। resistant his body became to it. Jiang Li had उन to लोगों से concoct डिस्कस करके ever फिर greater करना पड़ता है, quantities सारा सीन to होता है। ensure its continued efficacy, or he could have still आपसे perished at डिस्कशन any करना moment. पड़ता है, के That बाद चीज़ें हो explains why जाती हैं। Ayu said his dad has been getting worse, and why his mom went off to gather herbs. ये क्या है, ये कोई राइम है? वर्स एंड व्हाई इज वॉर्म वेंट ऑफ द टू गैदर हर्ब्स। God remains are extremely dangerous to be around, because humans have no natural defense against them. I shudder to think how many times Jiang Li has exposed herself to them. I fear that the situation is just as that adeptus described. In an effort to save Jia Liang's life, Jiang Li has abandoned all regard for her own safety. I never suspected that even Jiang Li would turn to the same path as so many others over the years. Perhaps this is the inevitable course of fate. To sacrifice one's own life to save others. To go beyond human means in order to do the impossible. Whatever the cost may be. Fate. Well, I think that it's too early to say with any certainty what fate has in mind. In any case, I have stabilized Jia Liang's condition for now,
So our immediate priority should be to get ourselves back to Qingsa village and find out where Jiangli is. Her regular exposure to god remains over such a long period will have been catastrophic for her health. And given that she's already been missing for several days, I am fearing the worst. It's me, Traveler, Dr. Baiju. ये बात सुन रहे थे पीछे से. It's Jill Young! Don't tell Paimon you overheard everything already. Dr. Baiju, please let me come with you. You've already done so much for my family. I can no longer just sit here and watch while you put yourself at risk for Jiangli's sake. After all, if it wasn't for me, she wouldn't have had to put herself in harm's way in the first place. I know I'm sure I'll be able to remember. I know there's a spot where she says goodbye to me every time she goes to gather her herbs. I'm sure I'll remember. I have to remember. Be careful. If you get too agitated, your blood pressure and stress levels will rise. Go to putting server further pressure setting, on your heart. then go to For एक your मिनट own ना. safety, you should stay here and rest. कुछ प्रेशर वैशर हुआ, ब्लड प्रेशर. Go to moderation section. There will be a ban option. Remove me from there. Okay, मैं देखता हूँ, एक मिनट क्या सीन है. Go to settings. सर्वर की सेटिंग पे कैसे जाऊं पर मैं. ये तो मैं मेरी सेटिंग्स खोल पा रहा हूँ. सर्वर की सेटिंग्स कहाँ से आएंगी. एडिट चैनल यहाँ से होता है क्या. परमिशन, एडवांस, क्या था. गो टू मॉडरेशन सेक्शन. मॉडरेशन रुको, इसमें वैसा कुछ तो आ नहीं रहा. यूज़र में सर्वर बूस्ट करके आ रहा है यहाँ पे. बूस्ट करके आ रहा है इसमें, लेकिन ये क्या है. बूस्ट दिस सर्वर. अरे नहीं भाई, ये तो पैसे मांग रहे हैं. सर्वर बूस्ट नहीं करना हमें. हाँ यार, एडवांस में है क्या. नहीं, इसमें तो डेवलपर मोड है. जैसे सर्वर ओपन करोगे तो ऊपर 3 डॉट आएंगे. सर्वर ओपन है, ऊपर 3 डॉट कहाँ है. सेटिंग्स. अच्छा, सर्वर सेटिंग्स ये रही. ओके ओके ओके, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया. चलो, मिल गया. रिवोक बैन आ गया आ गया आ गया. तो कर दे रहा हूँ. रिवोक कर दे रहा हूँ मैं जय भाई. बट वही है, थोड़ा सर्वर में ध्यान रखिएगा आप. मेरे को आ गया यहाँ पे ऑप्शन. प्लीज़ स्टे काम एंड क्लीन चैट्स. देखो अब आप आ जाओगे. ये लो, हो गया, मिल गया मेरे को ऑप्शन. अब देखो. No! We're out of time! We डन, have to go now. बिल्कुल डन हो गया. Right now! Before I forget everything again! This trip will be extremely dangerous, and there is a very real possibility that you will not return from it. Are you sure you're prepared for that?
I never expected to live this long in the first place. My death is already long overdue. So why should I fear it? Finally I can join in VC. बिल्कुल आप join कर सकते हो. There's only one thing I fear now, and that's that I'll forget her again before we manage to find her. Very well. Then follow. Follow me. ये कौन है? हुताओ लग रही थी वो मुझे. Dr. Baiju, are you heading out again? Yes. This could be a long one. Could you please prepare a dose of the usual formula? Please add an extra measure of mistgrass pollen and 1 dose each of the ingredients from the 3rd and 5th compartments of my medicine cabinet. Dr. Baiju, do you mean... Hop to it now. And remember to be careful with the cauldron this time. You don't want to burn yourself again. Okay. Okay. तो हम कहाँ जा रहे हैं? Return to the You want waste to of use my hat as an village. umbrella? The हम यहाँ audacity क्यों जा to रहे हैं? even make that request. Little Luo. वेलकम करो मेरा. अरे वेलकम आपको बॉट ने दे दिया होगा ना. नाइट बॉट को लगा के रखा है काम पे अपडेट भाई ने. वेलकम हो जाएगा. टेंशन काहे ले रहे हो? और मैं यहाँ पर भी वेलकम कर देता हूँ. वेलकम टू द डिस्कॉर्ड जय भाई. वेलकम वेलकम टू द डिस्कॉर्ड. स्वागत है आपका. पर प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना वरना मैं बैन हो जाऊँ भाई. सर्वर से मेरे को ही बैन कर दें. पता चल रहा है अगले दिन मैं ही नहीं कर पा रहा कुछ. ओके थैंक यू. वैसे You're so happy just to see the sun again. How childish. योस. That बिल्कुल भाई. strange feeling is back. It's just like the day I went missing. It's as if something inside me is trying to guide me somewhere. The Motherlode's influence is growing stronger. But is it because we're getting closer to the source? Or because the leakage of Che blood is growing more severe? Jialiang, can you sense which direction the source is in? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. DW बिल्कुल भाई. ऐसा ही यही चाहिए है मुझे. I think it's this way. आगे भी यही मैं बनाए रखना चाहता हूँ सबसे यार. सबसे अपनी दोस्ती रहे. सब लोग चिल करें सर्वर में. और कुछ नहीं चाहिए. एंजॉय करें भाई सर्वर को जितना I'm हो sure of सके. it. मौज मस्ती करें और आपस में खेलें मिलके. यही करना है हमें. अभी हमें फॉलो करना है जियालेंग. I feel a dull ache in my Liang. heart. This must be the way. क्या हो गया? इसको गिर ना जाए दोबारा. This place feels familiar. I think I've been here before. There is an inauspicious presence DW का here. मतलब डोंट वरी. Even I can ओके sense ओके समझ गया मैं. ये क्या है? प्रेजेंस हियर इवन आई कैन सेंस I इट. think I remember this place. Jialiang, are you okay? Maybe you should rest here while we continue the search. No, I have to keep going. Jiangli is still waiting for me. Then let's hurry. ओके कोई तो वेट कर रहा है. इसका हमें जाना पड़ेगा. ओ डोमेन. इसका मतलब समझ रहे हो दया. गेट तोड़ के हमें प्रीमोस मिलेंगे. स्टार्ट. This place gives Paimon the creeps. Who knows what we're gonna find up ahead?
The digging marks here appear immature and rather old. A thieves' ठीक tunnel? है, ठीक Paimon टनल है। has heard rumors about treasure around these parts before. Maybe it was the treasure hoarders that dug this tunnel. फिर तो भाई Judging इनकी by the बैंड बजानी tools पड़ेगी they हमें, left behind, it's चुरा के ले certainly a जाते हैं भाई यहाँ से माल। possibility. But why did they abandon this place without even stopping to pack up their tools? I remember now. She took me here once and told me that she'd found a way to save me in this cave. But she said that the method would cause me to, curses. कुछ तो Why किया can't I है remember उसने, what she said? उसको याद नहीं है। Easy, Jialiang. Come on, let's keep going. ओके, देखते हैं ये। The doctor was here. अरे भाई स्नेक, ओहो ओहो, Quietly now. वाह 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 वाह, Behold! कमाल का है भाई, सही डैमेज दे रहा है ये भी। बाइजू बढ़िया है। एक मिनट रुको पहले, और इसको खांसी चल रही है बाइजू को, थोड़ी दिक्कत है। I will have order. ये पर डेंड्रो में कैसे हो रहा है? मैं तो बस मतलब कैरेक्टर को लेके रखूंगा ऐसा कुछ है? डेंड्रो का इफेक्ट चिपक जाएगा उस पे? Whoa, there's a sensor here. Those treasure hoarders sure made themselves at home. I don't see any dust on the sensor's surface. I don't think this was left here by the treasure hoarders. I believe this sensor was used to burn a monster repelling incense. हाँ, दिल विच्छित तेरे लिए भाई, ये तो वीडियो मैं कितनी बार अब तो देख चुका हूँ, मतलब लिटरली बहुत लोगों ने भेज दी मेरे को ये। A monster repelling incense? You sure? 'Cause we डिस्कॉर्ड पे did भी run देख into चुका हूँ that मैं। group of monsters just बढ़िया डांस now. कर रहा था यार, मतलब लड़का, क्या दिक्कत है? The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were enticed here by some entity deeper inside the cave. वो बंदे के मूव से ना, इस गाने वाले बंदे के मूव से ना लग रहा है भाई डांसर था वो, No प्रोफेशनल। doubt an encounter with the very same entity was what prompted the treasure hoarders to flee and abandon their designs on this cave. After them, Jiang Li was the next person to discover this place and what lies inside. But to her, it presented an opportunity to save Jia Liang's life, albeit as a last resort. That's right. This sensor, it belongs to Jiangli. Yes, this was the place. भूपेंद्र जोगी, ओके। This is where I told उस Jiangli to बंदे give का me the नाम है? poison. डांस fine. कमाल का किया भाई उसने। Let's keep going. I can feel it. She is right below us, waiting for me. Waiting for me, waiting for me, open door। कुछ रह तो नहीं रहा, पहले हम हमारा नॉर्मल क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे आसपास। मैं कोई चेस्ट तो नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, बस ये पॉट छूट रहा है, इसको उठा नहीं सकता, मैं जेब में रख लेता, पर ठीक है, कुछ छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। और गहराइयों में ले जा रही हैं ये जगह हमें। और यार मैं तो ये देख के हैरान हूँ, इतने अलग अलग डोमेन बनाई हैं इनमें। I can feel it. We're getting close. We're almost there. What? It's right up ahead. The place where we made a pact together to. क्या हुआ इसको? ऐसे अजीब अजीब सी आवाज़ें क्यों निकाल रहे हैं भाई ये लोग? एक्टिवेट, ये भी एक मीम है। अच्छा, ये नाम किसी बंदे का नाम नहीं है, ये कौन सी मीम है? We can keep going now.
From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. ओके वाओ भाई इस गेम का ये चीज़ तो बहुत मस्त लगती है मेरे को ना डोमेन्स का इतना तगड़ा मैकेनिज्म होता है मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ा तो नहीं एक बार चेक कर ले रहा हूँ पीछे ये ऐसे ही खांसता रहेगा पर ये खांसी कब ठीक होगी कब सिर्फ दो इसको भाई नहीं यहाँ पर नहीं है 3 दरवाजे हैं राइट लेफ्ट और मिडिल और यहाँ पे कुछ और भी है जलता हुआ पत्थर क्या है Paimon doesn't see any barrier-breaking mechanisms around here. There are tracks here, and it looks like they're connected to something. Shall we follow it and see where it takes us? ओके यहाँ साला ये लोग दे नहीं रहे हैं भाई चेस्ट वगैरह ना एक मिनट ये पुश करने का भी आ रहा है एक्टिवेट करने पर नहीं खुला कोई भी गेट नहीं खुला पुश कर देते हैं तो यहाँ से नहीं होगा ओके मैं समझ गया इसका एक ऑरा जो है वो आपस में फैल जाता है ना तो मैं इस तरफ से पुश करूँगा डार्क्यू भाई आपके सर्वर में क्या कर रहे हैं अरे कल बहुत लोग ज्वाइन हुए हैं भाई कल बहुत लोग ज्वाइन हुए हैं कल रात की स्ट्रीम आप देखो वहाँ पर बहुत कुछ हमने चर्चा की है काफ़ी लोग ज्वाइन हुए थे रात में बातचीत की हमने काफ़ी मज़ा आया तो काफ़ी लोग आए हैं ऐसे ज्वाइन हुए हैं और हमने आपस में बात भी की थी ये खुल गया है ये मैकेनिज्म समझ गया हूँ मैं यहाँ का एक मिनट ये मुझे इनके पास ले आया है ठीक है यहाँ पे एक चेस्ट तो है ही A bitter pill to swallow. Yeah, ta. Ta. Busted. Things are about to get dicey. लून में सही जा रहा है भाई अभी मतलब ठीक है इसका मतलब कल रात को डेको गगन आपके बात कर रहे थे बिल्कुल भाई अरे ये अच्छा ये मैं देख नहीं पाया था क्या चीज़ थी जो अंदर घुस गई रो मैं सो गया था कोई बात नहीं Here comes the catch. ये खुल गया है पर ये लेना ज़रूरी है बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई बूंद बूंद प्रीमोस से बहुत सारे प्रीमोस हो जाएंगे हमारे पास Take it easy. ये वाला भी है तो पुश करना पड़ेगा इस तरफ से सही पोजीशन में नहीं हूँ मैं मतलब अच्छा को ले जाने का है बाबा मुझे लगा इससे गेट खुलेगा ये सामने ले जाना है कर ले जाना है ये मे बी ये यहीं पर रहेगा मतलब कैसे मिले आप उनसे अरे वो बहुत लंबी कहानी है लंबी तो नहीं है बट पता नहीं कैसे बताऊं मैं वो स्ट्रीम देखनी पड़ेगी आपको मेरे को भी याद नहीं आ रहा अब बातचीत करते करते ही ऐसे ही हम सब लोग ज्वाइन हो गए थे
पर काफ़ी मज़ा आ रहा था, मतलब रात में काफ़ी लोग ज्वाइन हो गए थे, बातचीत कर रहे थे हम लोग। ने ऐसा लग रहा था कि हमने एक पॉडकास्ट ही खोल के रखा है, मतलब लिटरली मज़ा आ रहा था। तो इसको वापस ले जाता हूँ मैं यहाँ पर कॉर्नर पे और एक्टिवेट कर देते हैं। आई मिस प्रीशियस स्ट्रीम। बिल्कुल भाई, कोई बात नहीं, वो तो स्ट्रीम है ना, मतलब स्ट्रीम पर कहाँ ही जाएगी वो यहाँ से। हाँ, यही कॉमन चेस्ट, यही तो चाहिए हमें। पर ये पत्थर जल रहा है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है इसका। तो क्या सीन है, Take it easy. वो घर नहीं ले जा सकते? दे दो यार, ये कुछ सही सा लग रहा है, चमकता सा। नहीं देंगे ये लोग। इससे एलर्जी है क्या इसको? ओके, मतलब मैं अक्कड़ पक्कड़ में खा गया हूँ कुछ, भूल ही गया कि क्या था। यहाँ से मैं आया था, राइट वाले से गया तब वो निकला वो वाला पत्थर, लेफ्ट वाले से कुछ मिला नहीं हमें, चेस्ट मिला एक कॉमन। अब हमें एक्टिवेट करना है इसको। ओके, ऑटोमेटिक ये भी एक्टिवेट हो गया है। चलो, फिर तो बहुत जोक्स और मज़ा आया होगा। बिल्कुल भाई, जोक्स, मज़ा भी आया और ज्ञान की बातें भी हुई, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। और नहीं नहीं नहीं, गिरना नहीं। ये क्या है भाई, ये कौन बैठा हुआ है? अरे नहीं 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 नहीं, ये तो भाई साहब, भाई साहब खड़े हुए हैं। Jolie! Look out! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. किसके Watch my पास है? back. वो कहाँ दिखी वो? पता नहीं, इसकी अल्टीमेट यूज़ करने का मौका मिलेगा। Seems like an emergency. Gotcha. The wind rises. बच गया ना। 3000 के आसपास जा रहा है इसका। अरे रुक के। हाँ भाई, ले मार, कितना मार रहा है। Busted. इसका बस आने दो एक बार, येलन का बस आने दो। Unsightly insects. वो 5000 का। That's far enough. ए 4000, ये अपने आप जाता है इसका डैमेज का। The doctor will see you. A bitter pill to swallow. Things are about to get dicey. कल कितने बजे तक स्ट्रीम किया? अरे कल पता नहीं, 3 ही बज गए थे भाई, ऑलमोस्ट 3-4 बज गए थे। नहीं, 3 बज गए थे, हाँ 3 बज गए थे कल रात में। मैं तो जल्दी जाने वाला था, 12-1 बजे तक मैं How serious सोच रहा is था it? जाने का। Is she? फिर हमारी बात स्टार्ट हो गई, तो फिर हम ऐसी बातचीत करते I can रहे still और feel a टाइम का पता ही नहीं pulse, चला। but her condition is quite grave. The god इतना remains मज़ा आ here रहा था। are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. What are we waiting for? Let's destroy the remains right away! It's not as simple as that. वही ना। Don't you remember what Baiju said? The poison within Jialyang's body is inextricably linked to the god remains here. If the source Okay. is purged, the poison in his system will stop having any effect. And the poison within Jialyang's body is keeping his heart condition under control. So, if it's... Oh no. Are you saying... Indeed.
If the god remains here are purged, then your life will come to an end. I wondered when this day might come. Wait. But we've all been working our butts off to save Jialiang's life. After all that, we can't just give up on him. Baiju, you're a great doctor. Surely you gotta know of some other way we can save him, right? You could continue to take the poison, which would buy you some time. As for Jiang Li, maybe... It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you. Right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take it and live. ये ऐसे पड़ी हुई है, क्या है मतलब ये क्या बोल रही है बोतल का? सर्वर में एक एडमिन रखो जो मॉड्स ऐड कर सके. मॉड्स अभी वैसे मतलब अभी लोग बढ़ रहे हैं, देखते हैं मॉड्स का भी सीन करेंगे, टेंशन मत लो. Dr. वो चीज़ें भी Baiju, सोची होंगी give it to me straight. सर्वर के लिए. How long? The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. But if I were to treat her using मैं a थोड़ा बात भी secret करूँगा हाफ art, भाई से इस बारे में कि मोड्स का कुछ सीन रखें, पर वही है कि लोग अच्छे से काम करेंगे तो उस हिसाब से भी थोड़ा देखा जाएगा लोगों को कि कौन लोग सर्वर में काम कर रहे हैं अच्छे से, तो उस हिसाब से भी रखेंगे कि जो मतलब अच्छे से काम करेगा, जो मेंटेन रखेगा चैट्स को भी, हो सकता है वो बन जाए मोड, ऐसा भी हो सकता है. But what would be the point of that? Dr. Baiju, I'm all too aware of the dangers of God remains. You are not the first to mention it to me. If I continue to sustain my own life using this wretched substance, not only would Jiang Li have to keep risking her life to make my medicine for me, but I would have to live with the looming threat of these remains breaking out and wreaking havoc not just upon me, but my entire यही मेरा family. कॉल आ गया, एक मिनट रुकना गाइस. I know for a ओके गाइस, fact थोड़ा that I सा should have काम आ died गया है, over a जाना भी decade पड़ेगा, ago. बट ये जल्दी जल्दी हो The जाए. fact that I've been around to ये see वाली how you grow ऑलमोस्ट up ख़त्म is होने वाली है already ना. a great blessing from Rex Lapis. If my choice can bring Jiang Li back, then even if I, जल्दी बोल, कल सुबह पलमेल नहीं निकलना, अभी निकलना है. after cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baiju, could I have another minute with my wife? I just want to have one final moment together. फाइनल मूवमेंट क्यों भाई, क्या हो गया? of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to repay your kindness in this life. Jialiang, Baiju, Changsheng, is there really nothing else you can do?
I am sure that over the years, Jiangli will have tried all the conventional methods known to humankind. As for less conventional methods, I have little expertise besides Changsheng's secret art. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiangli would not have had to resort to unnatural methods. और अनाउंसमेंट वाला सेक्शन ऐड करो जिसमें आप लाइव आओगे तो ऑटोमेटिकली सर्वर पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। अरे ठीक है, मतलब वो भी कर देंगे, मतलब ऐसा कुछ भी सीन नहीं है इतना ज़्यादा। अब यूट्यूब वाले नोटिफिकेशन भेजते तो हैं, What a कभी crazy कभी नहीं भी जाती है उनकी situation! Jiangli नोटिफिकेशन, पता नहीं क्या ही risked it all करते to रहते हैं भाई save यूट्यूब वाले भी। Jiangliang's life, and now Jiangliang has to sacrifice वैसे करना himself तो to पड़ेगा यार, save सही कह रहे हो, मतलब Jiangli. एक तो What's the point of it all? एक तो क्या रहता है कि मेरा कुछ वो नहीं रहता, डिसाइड नहीं रहता कि आफ्टरनून में या कभी भी कुछ कुछ काम I've आ जाते हैं। seen अभी भी many आ गया है, final जाना पड़ेगा farewells मुझे। in my time, but In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations of masters before you have always believed. the path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, I cannot help but think that theirs are the lives least deserving of death. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be time for me to go. If you could सैड है only भाई see काफी, him now. He took me बचा all नहीं the पा रहा है way to इसको। Liyue कैसा डॉक्टर है Harbor यार? to see the doctor. And he even got the Adventurers Guild to search for you. गगन का भी यही हाल यही है। अरे So, वही है I भाई, know that you'll थोड़ा both सा be okay without me. क्या करें बताओ। अरे I've said my goodbyes. My time has come. Do what you must. As you wish. का क्या मतलब है भाई, वो बच्चा फिर? ओके, वो पॉइजन खत्म हो गया। It will eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. अरे कुछ हो जा। I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch Ayu grow up. और कमांड्स ऐड करो। हाँ यार, कुछ मतलब कमांड्स हाबलत भाई ने डाली है उसमें, कुछ कुछ काम किया है सर्वर पे। अब देखते हैं और करेंगे वो यार, अभी थोड़ा बिजी थे वो, और जब वो आएंगे तो वो करते हैं उस पर काम। Mom, something's really wrong with Dad. और मुझे मिलेगा टाइम तो मैं भी देखता हूँ क्या सीन रहता है यार, मेरे को आइडिया नहीं I will रहता gather some medicinal herbs right चीज़ों का, away. ये सारी चीज़ों का। I promise you, nothing उनको will happen to our family. ज़्यादा पता रहता है डिस्कॉर्ड पे, क्योंकि वो यूज़ करते रहते हैं डिस्कॉर्ड वगैरह। पहले भी वो करते थे, मतलब ज़्यादा यूज़ करते These थे। मैं memories come to mind वॉइस सर्वर now. ज्वाइन करने के लिए ही बस करता था। The longer we live, the tighter we cling to what we have. अरे दोनों ठीक हो गए। Oh, how I would love to hear your voice one last time. Jialiang! 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 Dad, are you awake? Jiangli, are you? Didn't I... Huh? What are these? How does it feel to come back to life? अरे वाह, बचा लिया भाई उसने। अब रात को मैं भी वीसी ज्वाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल जय Do भाई, you feel बिल्कुल कर सकते strange हो। or different in any way?
If so, could you describe it to me in रात detail? में इतने लोग हो जाते हैं ना, इतनी भसड़ हो जाती है भाई, मतलब इसलिए वो लोग थोड़ा ज़्यादा लोग माइक ही बंद करके रख जाते हैं, पर वही है कि सबको बोलने का मौका ही नहीं मिल पाता, इतने लोग हो जाते हैं फिर। Dr. Baishu, I thought that I was going to. Die? You did indeed. As things stand now, you're more अभी उसको akin थोड़ा to a मेंटेन zombie वैसे than a रखना पड़ेगा, human. I'm a zombie? वीसी सर्वर को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, आई एम ज़ॉम्बी। That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few ज़ॉम्बी days, बना a दिया few उसको भाई। months, or a few years, I am as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Who finds this arrangement to be a satisfactory one. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jia Liang's iron will. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. एंड नाइट बॉट, हाँ नाइट बॉट अभी हाफलर भाई ने सेट करके रखा हो, उसमें वो वेलकम करता है और शायद रैंक भी दिखाता है कुछ कुछ चीज़ों की, और उसमें कुछ अचीवमेंट्स वगैरह ऐड किए हैं उन्होंने, काफ़ी काम किया है उस पर, All I know is that if I'm तो उनको presented ज़्यादा with a आइडिया रहता है, life तो that उनसे बोल deserves दूंगा to मैं be कि कुछ कुछ saved, और ऐड I will करेंगे do everything in my चीज़ों को। power to save them. And even this would have तो counted हो for पाए तो रात nothing को अगर without वो आ Director पाए Who's आज assistance. ऑनलाइन, अगर आएंगे तो After फिर उनसे all, बातचीत हो did you जाएगी। not tell Jia Liang to show us the way before we set off for Chingsa village? बाकी अभी कुछ टाइम से तो वो भी आ नहीं पा रहे हैं लाइव, तो थोड़ा मतलब वो भी बिजी है, Oops. ये And काम भी नहीं हो I'm रहा। busted. Without Director Who nudging things in the right direction, we may not have found Jiang Li in time. So it was Hu Tao. I knew someone was listening in on that No conversation. wonder he didn't mention the elixir back then. यही थी, I thought he was being हमें तो frank पता था and भाई, हमने transparent with पहचान me गए for थे। once, but apparently not. Director Who told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baishu's attention. Never underestimate a serpent's sense of smell. All I wanted was to help Jia Liang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs to be. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never mind. I'll just have to put it down in the books as a deferred consideration. One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad. When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baiju, and cure Dad for good. Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng funeral parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. बिल्कुल। Traveler, Paimon, I'll catch you all another time. Oh, is she finally gone? ये उससे डरती है क्या? All's well that ends well. If you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. बिल्कुल भाई, such as At times like this, a grand celebratory feast is in order. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Zhongli and Ayu around the dinner table. this was a hard-won meal. Hey, Paimon can't wait! Alright, first things first, off to the market for some fresh ingredients. Let's go! Oh, wait Admiral up! कब I'll आया come too! सर्वर में? कल रात को ही आए थे वो, साथ में थे वो, Baiju, thank you Discord server so पे थे। much for everything you've done for us. Don't mention हमारी it, Jiangli. बातचीत भी हमने की, I was थोड़ी just हो पाई doing my मतलब। duty.
Just your duty, huh? क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे Baiju, ना, बहुत लेट Changsheng, तक स्ट्रीम की थी। would you mind if we took this conversation outside? फॉलो जियांगली, फॉलो जियांगली, जियांगली, अच्छा ये जियालियांग है, फिर वो कौन है, कहाँ है वो? गुलजा सिमसिम, रात को लाइव आना, देखते हैं ब्रदर, मतलब क्या बोलूँ मैं तो खुद ही चाहता हूँ यार, को फॉलो करना है। Time flies. अगर कुछ It's काम been नहीं so आया तो long since we bade each other बिल्कुल, farewell in मतलब Chenyu 10 Vale. बजे के आसपास आ ही जाता हूँ मैं। Changsheng, you're the same as ever. You haven't changed one bit. तो उससे You, पहले तो on मैं the थोड़ा, other hand, मेरा have टाइम changed शेड्यूल a ये था lot. कि 9 You're से right. 11 तक My मैं करता younger था स्ट्रीम self would पहले, have never imagined 9 से that 11 तक things मैं आ would जाता one था। day turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baiju. यार ये ख़त्म कब होने वाली है, जल्दी मेरे को जाना है, ये फिनिश करके जाऊँगा मैं। चल भाई जल्दी चल। I've taken a look at your elixir of immortality. It's not altogether dissimilar from the poison I concocted in terms of the way it functions. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison to maintain life. I hope you're not too upset at me for copying your methods. No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my poison, I believe you would have eventually arrived at the same approach. But I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough understanding of it. Jialiang's still only been in your care for a few days. Not just that, you even managed to improve upon the original formula. That cannot be explained by intellect alone. Baiju, be honest with me. Did you try out some of the poison on yourself? Huh. Told you the truth would surface sooner or later. Life force isn't the only thing that Changsheng's contract lets you transfer between bodies. Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer of toxins and diseases. When I Oh, treated bhai sahab. Jia Liang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my own. Not only अरे did this allow me to alleviate the burden on him, but it also gave me an opportunity to study its properties. खुद के बॉडी में कर लिया भाई उसने, There क्या is बात no है। need to worry about any long-term consequences to my health, however. Now that the source has been destroyed, any remaining poison in me will have already dissipated. जब से आपने स्ट्रीम स्टार्ट किया है तब से हूँ। अरे क्या बात है भाई, क्या भाई क्या बात कर रहे हो आप, तो मतलब बहुत पुराने खिलाड़ी हो। But you took such a huge risk. If we hadn't destroyed the god's remains back there, then even you might have... What am I saying? I'm in no position to criticize you for this. The reason I left our master and went into hiding all those years ago was that he was getting old, and I didn't want him using up any more of his own life force to treat my husband. But in the end, how were my methods any different? I risked one life to save another, and then you tried the poison on yourself too. बिल्कुल भाई, क्या It looks बढ़िया like डॉक्टर है, both of खुद us पे have ही ended up एक्सपेरिमेंट कर going लेता है the भाई। same way as our master before us. क्या बात है, क्वेश्चन भी खत्म होने वाला है। अच्छा Are all disciples of Chenyu Vale destined to turn out this way? To live a short life, having given away our own for the sake of others? To fight relentlessly against the natural course of life and death, whatever the cost? अरे जो Maybe our स्ट्रीम fate is sealed the अभी चल moment रही we है decide उसकी to स्टार्टिंग study से हूँ। medicine. ओके, हाँ ये तो है, We are doctors, चलो आप Jiangli. स्टार्टिंग से देख रहे हो We भाई। ought never say that anyone's fate is sealed. मेरे को आपके चैनल को ज्वाइन करे
1 मंथ से ज़्यादा हो गया। मैंने 1 महीने पहले ही मतलब नहीं 1 महीने नहीं 2 महीने से ऊपर हो गया है मेरे को। ज़्यादा ही हो गया मतलब 2 ढाई महीने से भी ज़्यादा हो गया, 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने हो ही गए हैं, यही मान के चलो 3 महीने हो गए मेरे को करते हुए इस जेंशन की स्ट्रीम। Baiju, 3 महीने हो गए मेरे को I can और tell that काफ़ी लोगों से मिला over हूँ the मैं years, you've इस used the बीच में contract और with काफ़ी मज़ा Changshang to आया है मतलब transfer सबके साथ many ही यार diseases and काफ़ी अच्छा toxins to लगा। yourself. There are so many that some of them I don't even recognize. जेंशन पे काफ़ी Can अच्छे लोग मिले हैं you मतलब यार बहुत still stop before it's too मतलब सही late? है मतलब जेंशन का सीन जो है ना I लोग think you हेल्प know एक the दूसरे की answer, बहुत अच्छे से Jiangli. करते हैं, Every one of us from समझते हैं Chenyu गेम को, Vale एक believes in दूसरे the को भी same बहुत अच्छे से thing. समझते हैं। काफ़ी मज़ा आता है भाई, ऐसा ही होना चाहिए। Mom, come and join us. The traveler taught me a load of new recipes and said even Dad'll be able to taste them. Come and try them out. Yes, darling. Mom will be there in just a second. Hey, slow down. प्रोबेबली आप उस टाइम जोंगली की क्वेस्ट कर रहे थे। अरे भाई मैं तो भूल ही जाता, मेरे को सही में याद नहीं रहता यार। Baiju, आपने इतना याद रखा I मतलब know I won't be able to मेमोरी convince आपकी you, बहुत अच्छी है, but शार्प है मेमोरी है। please don't forget that if one day you're not around anymore, Chi-Chi, Gui, and all the friends who have grown fond of you, they will all miss you dearly. There's no need to worry, Jiangli. I know what I'm doing. I can only hope so. वैसे ये गेम में दोबारा भी खेल लूँगा ना तो मतलब मेरे को वही है, 3 मतलब मेरे लिए नया ही है। Baiju, what did काफ़ी कुछ Jiangli भूल जाता हूँ, mean वैसे by मूवमेंट्स याद not रहते हैं कुछ around कुछ काफ़ी anymore? मज़ेदार। Are you gonna be okay? व्हाट डिड शी मीन Every एग्जैक्टली? single mortal I've ever contracted with, including Baiju and Zhengli's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live long. It is a very long story. अरे ये अब स्टोरी ना सुनाने लग जाए भाई, आएगा क्या? Long सुनाएगा। ago, when plagues ravaged the Okay, story land, time guys, story time. one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine Zenitsu, could not welcome to stay the the stream, tide brother. of Welcome, disease. welcome. Orava, And after working Zenitsu. tirelessly for many Orava, years, brother, welcome. even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Chenyu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force सर्वर spent. में जैसे एडमिन्स है His वैसे ही final act स्ट्रीमर्स in वाला life ऐड करो, was to pass उसमें on गगन the और contract ड्रैको to को his डालो। final patient, यार उनका अपना his सर्वर है, वो अपने favorite सर्वर में काम disciple. करते हैं यार, ऐसे The मतलब वही है ना, पूछ disciple ये करना chose to पड़ेगा ऐसे कैसे। dedicate their life to saving the lives जो of others. स्पेलिंग इज रॉन्ग। And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors and followed it myself unquestioningly. That is until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poison chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured.
Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn अरे them or streamer balance section, their streamer chi, section अच्छा I अलग can से never save them. देखना पड़ेगा भाई अभी And you? सर्वर में क्या सीन What's है your क्या नहीं। answer? आपलोड If भाई I से पूछना abandoned the पड़ेगा पहले तो contract and बताना left पड़ेगा you उनको without क्या a क्या। host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojin. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. और बाकी If जो there's a लोग life काम in कर रहे front हैं of me that deserves to be saved, सर्वर पे why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. End with me. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. अरे All my गीगा निगा hosts have वेलकम टू been द most स्ट्रीम pure of गीगा heart. भाई वेलकम वेलकम। ये तो जय भाई ही है ना, मतलब उन्हीं की आईडी है ये तो। अब चेंज क्यों करके आ गया आईडी? But when one with an altruistic आपको nature एसएस gains भेज रहा हूँ access देख to this लेना। art, ओके they are more seduced than the average person by the miracle of overturning the laws of life and death. Though they know better than anyone else the fate that awaits them, when faced with the sorrows of humanity भाई खत्म क्यों नहीं and हो the रही? pain of losing their nearest and dearest, they cannot help but reach beyond human means. They are like moths that throw themselves into the flame, मेरे को कॉल आने वाला है seeking a वापस से, मुझे glimmer जाना of पड़ेगा। hope in a dark world filled with pain and suffering. So, Baihu, does that mean... I suppose that would make me a moth that yearns for the light, but doesn't want to be burned to a crisp. Changsheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the world. It's just like we witnessed. Either Jia Liang feared for Jiang Li's life, or Jiang Li grieved over Jia Liang's sacrifice. भाई इतना अजीब एक ही तरीके का नाम। I have nothing but the Jialiang. utmost respect for my predecessors, who sacrificed their lives for their principles. But I do not wish to join their ranks, nor do I wish to pass on this contract to anyone else in the future. Huh? But didn't you already transfer a ton of diseases onto yourself? What makes a poison poison? And what makes a disease a disease? When it comes down to it, are not both mechanisms that affect the operations of the human body? If disease is defined as deviation from normal functioning, then who knows? Perhaps the true elixir of immortality could in fact be a kind of poison. Many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me, it is no different from the way our ancestors tested the medicinal qualities of herbs by sampling each and every one. I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Changsheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, doesn't it? The elixir of immortality. Precisely. I will be Changsheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end with me. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. But isn't wanting to have it all what makes us human? अरे एक मिनट कॉल आ रही है गाइस, एक मिनट रुकना।
For a selfish moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light, भेज दिया ओके the मैं only चेक कर path लूँगा forward आपने is ऐसे up लोगों को towards the क्यों एडमिन moon. बना के रखा है जो कुछ नहीं करते भाई किसको बना के रखा है क्यों नहीं करते For कुछ और once, Paimon just does not know what to say. Dr. Baiju, Traveler, what are you still chatting about? The food's about to get cold. We also have coconut milk for Changsheng and Paimon. Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till after we've eaten. I'm on I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, although we call them simple pleasures, are such यहाँ पे things as बात these पाइमोन की not हो रही है भाई precisely why we mortals cling desperately to the life we have? हो गया चलो हो गया भाई कंप्लीट क्वेस्ट कंप्लीट काफ़ी अच्छा था मतलब लोगों ने बताया था उस हिसाब से ही था 60 प्रीमोज बस बहुत ही अच्छा क्वेस्ट था बहुत ही बढ़िया था बहुत ही बढ़िया शानदार एकदम जानदार क्वेस्ट था भाई मज़ा ही आ गया करके मेहनत का फल प्रीमोज होता है मेहनत का फल प्रीमोज चलो गाइस अभी जाने का वक्त हो गया है होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज की स्टोरी को बाइजू की स्टोरी को आपने एंजॉय किया होगा तो कैसी लगी बताना और मिलते हैं रात को मतलब पॉसिबल तो होना चाहिए वैसे कुछ काम तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से अभी रात को तो बाय बाय गाइज अभी के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग बाय बाय Honey, I'm perfect. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Disgusted with myself and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa.